बिस्मिल्लाह कीजिए। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome all participants. Today's our 33rd continuous session of the PMA and with collaboration of Women Medical College, Ahmedabad and Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad. Today's we have invited teacher of teachers, Dr. Journal retired Professor Imran Majeed Saab. Sir, so kind of you. We know you are busy and you gave the time in your schedule. And another thing is today's topic is very important because the heart disease is one of the most commonest disease, not only in the Pakistan and also in the world. Another thing is that there are so many myths and other things are attached with this heart disease. Jana Sahab, आपको तारुफ करा दें कि ये हमारा from we started this webinar weekly. Professor Salma Kundi is the president of PMA. I as a principal of AJKMC Medical College Muzaffarabad. With this collaboration, हमने COVID के हर week में we provided not only the information, also we provided the realities and other myths and other things about the vaccination side. So before starting and introducing you, I will request Rashid Saab, Professor of Physiology, to start, before starting this webinar, recite the Holy Quran. Professor Rashid Mahmood Saab, Professor of Physiology. Right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. तर्जुमा, ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और लोगों को नेकी की तायीद करें और बुराई से रोकें और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्जे में है. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Jazakallah. Thank you very much, Professor Rashid Saab. So I am happy to introduce Professor Imran Majeed Saab, Lieutenant General, retired. Sir started as the services as a consultant cardiologist and known cardiologist in the Pakistan and so many services in the AFIC. After that, Sir joined the Surgeon General and Surgeon General of Pakistan, and then Professor Imran Majeed from 2016 remained the Vice Chancellor of the NUMS. Sir, because you know basically you are the cardiologist, that is why we requested you. Your name is do not need the introduction anyhow, sir. Now it is over to you, sir, to start today's lecture, heart diseases, myths and the realities, sir. Thank you, Professor Mulazim Hussain Bukhari. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Pehli to ye कि it's a great privilege for me and very kind of Professor Mulazim Hussain Bukhari and all you office bearers of Pakistan Medical Association, Azad Kashmir, to have invited me for this topic. Jab Professor Mulazim Saab ne mere se baat ki, I thought ke what I would like to share with you is my own personal journey through cardiology in particular and medicine in general, be that services during my tenure at the armed forces, whether in medicine or in cardiology, or for all the stints that I had internationally.
I chose that let's talk about heart disease the way we have perceived it. The way we perceive things is the way we are taught and the endeavors we make to try to understand what we have not been taught. पर ये एक वो चीज आती है कि जो हमें पढ़ाया जाता है, देखिए आप और मैं नहीं जानते, जब पढ़ाया जा रहा है तो हम तो फर्स्ट स्टेप्स ले रहे होते हैं, सो वी जस्ट बिलीव व्हाट वी आर टॉट, व्हिच मींस हमारी जो थॉट सिस्टम बनता है और बिलीफ they are structured in hand, they are structuring them those entities. उसको हम कभी आमतौर पे देखिए तो हम चेक नहीं करते तो क्या इस हकीकत मबनी है या नहीं. This I'm going to claim the talk that we were taught. तो उसमें देखें ना हमारी ज्यादातर तो जो इंफॉर्मेशन है इस टाइम पे वो सेट हो जाता है. That is true. Then we go through experiences of medical profession. तो हम आहिस्ता आहिस्ता gems pick up करते रहते हैं, assimilate करते रहते हैं. But here comes the problem. You see, as soon as we become physicians, consultants, doctors in any form, we also become very busy. कि वो patients का diseases का burden इतना होता है कि आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि खुद से पढ़ने का अगर जब तक किसी को पैशन ना हो, बहुत डीप इंटरेस्ट ना हो, तो जस्टिस ना हो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और उसी में थ्रेट होता है कि पीपल कैन, मिसाल के तौर पे अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या मेडिकल some which is now what it can in the simplest possible terms that what happened to my profession, cardiology. So let me go to my first slide, the myth. ये जो सबसे बड़ी myth, probably the biggest, most dangerous myth of last century was the cholesterol hypothesis. And that was coronary arteries में, brain की arteries में, kidneys, wherever, arteries में ये जो atherosclerotic plaques बनते हैं, they are because of cholesterol. You know, when I was working as a cardiologist, I would always be confused. I remember when statins, the cholesterol controlling drugs, came in the market for the first time, तो उस वक्त कॉन्सेप्ट था अच्छा भाई जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो उसको स्टैटिन प्रिस्क्राइब करना. At that point in time in early 90s, the concept was not that of prescribing statins for primary prevention. शुरू में secondary prevention से आया. And here came the dilemma. All of us practicing cardiologists got to realize कि उनमें से किसका कोलेस्ट्रॉल हाई. And that would confuse us because one found that most of the people who had heart attack had either normal cholesterol or just marginally high cholesterol. और वो बड़ा rare था कि किसी का cholesterol बहुत ज़्यादा. So that was kind of confusing. But then, you know, that's where the industry got in. और फिर industry ने उसकी revisions भी कराई, cholesterol की levels का normal standard क्या है. जब आप डिक्लेयर कर देंगे नॉर्मल स्टैंडर्ड को और नीचे तो मोर पीपल विल बिकम एलिजिबल टू बी प्रिस्क्राइब्ड. और फिर प्राइमरी प्रिवेंशन की स्टडीज एंड ऑल. नाउ द टाइम विल नॉट अलाउ मी कि हाउ दीज स्टडीज वर इंजीनियर्ड बाय द इंडस्ट्री, हाउ दीज थिंग्स वर कॉम्प्रोमाइज्ड. उसके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था वो भी कंपनीज ही करती थी, उसकी डिटेल में जाने का टाइम नहीं होगा. परहैप्स if somebody is interested, I may answer some of the questions, or it will need a very long discussion at another point in time. But I want to come to, you know, बात करते हैं किसी को इल्जाम देना मुनासिब नहीं होता. But I'm afraid in science हम references use करते हैं तो नाम लिया जाता है. And by design, I put in the here
द पिक्चर ऑफ टाइम मैगजीन, एंसल कीज, और ये जनवरी 1961 को टाइम मैगजीन के कवर पे गए with his notorious 7 country study. 7 country study किया थी कि ये असल में इन्होंने 22 ममालिक का 1950s में डेटा इकट्ठा किया कि डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेडन फूड्स, फैटी फूड्स, एनिमल ओरिजिन के फूड्स वगैरह वगैरह जो है, तो उनमें से कितनों को एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है. Now I just show you, this was the 7 United States, American continent. कवर पे legendary data इसमें उन्होंने क्या परसेंटेज ऑफ डाइट Imran Majeed sir has to unmute himself. आप वो mute हो गए हैं sir. जी मैं उसको कहता हूँ मैं जी Is सर it all right now? यस सर यस सर यस सर मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं लेट मी ठीक है, रिट्रैक्ट ठीक। माय स्टेप्स एंड कम Okay, बैक टू okay. कि ये जो मैंने आपको, सो यू कैन सी द स्लाइड्स, कैन यू? स्लाइड्स तो नजर आ रही हैं आपको? नहीं अभी नहीं आ रही सर, स्लाइड शो अभी नहीं आ नहीं रही। आ रही, पहले आ अच्छा, रही मेरे थी. ख्याल में स्लाइड शेयर तो मैं फिर दोबारा जाता हूँ एंड शेयर करता हूँ, तो आई थिंक डिस्कनेक्ट. जी So जी I'm back, I believe. Okay, so let me go to the slide where we disconnected. Are we all right now? Yes, sir. ठीक हो गया जी, स्लाइड्स है। नजर आ रही. ये जो आपके सामने मैं डेटा दिखा रहा हूँ, अब ये जो दो ग्राफ्स बने हुए हैं, राइट साइड पे ग्राफ में देखें तो ये 22 कंट्री का डेटा था, लिंकिंग कैलोरीज कमिंग फ्रॉम फैट एंड हार्ट अटैक से जो डेथ्स होती थी पर 1000 पॉपुलेशन, ये डेटा है. इफ यू लुक एट द डेटा, इट इज अ स्कैटर प्लॉट. यू कैन इमेजिन इसमें कोई बड़ी अच्छी कोरिलेशन नहीं बनेगी. व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली टेम्पर्ड विद द डेटा, और उन्होंने एक फैसला किया कि कोरिलेशन लाइन दिखा दी जाए जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं, और वो जो डॉट्स जो उस लाइन के करीब करीब थे उनको रख लिया. फॉर एग्जाम्पल, सी द प्रॉब्लम वाज फ्रांस में बहुत हाई कैलोरीज का इंटेक था एनिमल फैट से, उसमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज बड़ा कम था. द सेम वाज द केस इन नॉर्डिक कंट्रीज, स्वीडन में, फिनलैंड में, उसका डेटा भी गायब कर दिया गया. चिली में, इटली में भी ऐसे ही था, उसका भी डेटा जो खाली वो एक डॉट देखें जो कि इसमें नीचे आ रहा था. चिली में देयर वाज अ वेरी लो इनटेक ऑफ calories coming from animal fats, but there was a very high incidence of heart disease. So all that data was made to disappear. जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप और मैं, हम सजदे में चले जाते हैं अमेरिका से, टाइम मैगजीन में या कोई चीज पब्लिश होती है, हम कहते हैं ये सही. You see, that gentleman was not even a doctor. आप उनकी क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं? उन्होंने MBA मार्केटिंग किया हुआ था. So I don't want to go कि इसके पीछे क्या forces थी, ये क्यों किया गया. That would be a 2-hour talk to provide you evidence of that, which people have provided subsequent to his death in 2004. जबकि उनके अपने co-authors जो थे, उन्होंने फिर whistle blowing की और उन्होंने कहा कि जी असल में हकीकत ये थी. जब हमने कहा जी आप फैक्चुअल डेटा जो 22 कंट्री का उसको पब्लिश करें और बताएं इट्स अ वेरी पुअर कोरिलेशन, तो उनको बड़ा बता दिया गया कि यार तुमने
करनी है या नौकरी करनी. Now you know, even anywhere in the world, ये सारी चीजें, you understand, all this happens, and this led to probably the biggest. I say it as somebody, a luminary professor है मेरा दोस्त अमेरिका में, इसने कहा कि perhaps cholesterol myth and treatment for heart disease with statins was the biggest scandal of the last century in medical profession, or it was perhaps medical profession का किसी भी century का सबसे बड़ा scandal. Because in these last 30 years, $1 trillion. So ये जो चीजें इसका statin lipid are very popular sentence. Lipid of heart attack %. ये उनका वो खास तौर पे वो जो मेडिकल what every study. I give उनके सिग्नल्स वीक हैं, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बार बार. सर अगर वीडियो ऑफ कर दें तो मेरा ख्याल है शायद बेहतर हो जाए. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल. वीडियो सारे अगर ऑफ कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन स्पीकर ऑफ कर दे तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है. अगर अपने वीडियो सर ऑफ करके सिर्फ प्रेजेंटेशन पे रखें तो सर ज्यादा बेहतर होगा. Mulazim, what I'll do is I think I'll change the room in my house. It is possible कि यहाँ से bad connection आ रहा है. So if you give me 1 minute, I'll change the room and probably we'll have a better connection there. ठीक है? So let me change the room. दूसरे कमरे में जाके किसी को ले जाते हैं. उधर से we'll make the presentation. ठीक है, ठीक. So let me see. Usually, जी सर. this tends to have a better presentation. इसका connection and slide share. Okay, so here we are back. Okay, here we go. Are we all right? यस. ये मैंने अभी आपको, let me go back. मैं आपको बता रहा था ये एक मिथ थी जिसके भी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि 36% कैसे दिखाया गया. How 1.1% reduction in treatment group was shown as 36%. I'll come to this jugglery of statistics जो कि हम डॉक्टर्स क्योंकि we are not really researchers. हमारी research methodology में ऐसी तरबियत नहीं होती. और statistics की वो कौन था, वो अंग्रेज जिसने कहा था there are lies, there are damn lies, and then there are statistics. So statistics को आप bombard कर दें to people who are not very savvy in understanding. And the whole story was यह एक term इजाद की गई जिसे कहते हैं relative risk reduction. What the doctors and patients understand is absolute risk reduction. जिस स्टडी को मैं allude करूंगा, आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, उसमें प्लेसिबो और एटोरवास्टैटिन के दरमियान जो मोर्टेलिटी का फर्क था वो था 1.1% का, और उन्होंने उसको डिवाइड किया कि 3% डेथ्स हुई थी इन द प्लेसिबो ग्रुप एंड 1.9% इन जो एटोरवास्टैटिन ले रहे थे.
1.1 को डिवाइड किया 3 से 36% का रिजल्ट आ गया। एंड दैट इज दिस इज द गिमिकरी दैट यू यूज। नाउ लेट मी कम टू, अभी जनरली हम कहते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इज इट रियली बैड कोलेस्ट्रॉल? ये आप स्टडी देखें बीएमजे ओपन में, चाइना की एक बड़ी 18-19 हजार के ऊपर उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा द हायर द कोलेस्ट्रॉल, lower the all cause mortality including cardiovascular mortality, and lower the LDL cholesterol, greater the all cause mortality. अच्छा, वो चाइना से आती है तो बड़े लोग जुजबुज करते हैं, खासतौर पे वेस्ट में, बट हियर कम टू दिस। ये बीएमजे ओपन में 2015 में पब्लिश हुआ। माय पेन इज 7 साल या 6.5 साल इसको गुजर गए। Still, why statins continue to be prescribed as the cornerstone of our therapy for coronary artery disease? When it clear, this is a systematic review based on meta-analysis of जो उस वक्त तक 18 सबसे बड़ी epidemiologic studies थी, trying to link LDL cholesterol level in blood with incidence prevalence of mortality due to coronary artery disease, stroke, and all causes. And what they found again was that lower the cholesterol, higher the mortality, higher the cholesterol, LDL cholesterol, greater the benefit. उतनी कम mortality होती है, अगर low LDL cholesterol हो तो mortality ज़्यादा होती है। इसके बाद 2015 में फाइनली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस है डाइटरी रिकमेंडेशंस में, एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी रिवाइज्ड, और अब अंडे खाना और बीफ खाना और सारा कुछ, बटर, चीज, क्रीम, वो सारा हलाल हो गया। व्हाई, व्हाट इज गोइंग ऑन? अब ये वो स्टडी है जो मैं आपको बता रहा था कि ये एस्कॉट एलएलए का डेटा यूज किया गया था, ये जो इश्तिहार में था। इफ यू लुक एट दिस, एटोरवास्टैटिन पे जो पेशेंट्स थे उन पे देखें 98.1% सर्वाइव जिस टाइम पीरियड में, जितने अरसे उन्होंने देखा, तो इसमें 1.9% डाइट, प्लेसिबो ग्रुप में 3% डाइट। उन्होंने 1.1 को 3 से डिवाइड किया, विच इज नॉनसेंसिकल, जस्ट टू मैग्नीफाई द इम्पैक्ट। वरना आप कहेंगे कि जी 1.1% का डिफरेंस है, 98.1 से 97 माइनस करें तो इन दो ग्रुप में एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन 1.1%, which is logical. बट अगर खास तौर अगर आपके पास एक मरीज आता है, वो कहता है जनाब आप ये दवाइयां लें, जिसमें 30% लोगों को इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगेन दैट इज अनदर स्टोरी कि उसको कैसे हाइड किया गया, पर्टिकुलरली इन विमेन के जो ब्रेस्ट कैंसर जो है, उसकी अगर आप उसकी जो रिस्क थी अकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, वो 36% ज्यादा थी, और एब्सोल्यूट रिस्क, और रिलेटिव रिस्क 1266 टाइम्स ज्यादा थी। उसमें उन्होंने उसको नहीं दिखाया, एब्सोल्यूट की बात की, रिलेटिव को नहीं दिखाया, और इधर एग्जेजरेटेड क्लेम को दिखाने के लिए रिलेटिव रिस्क रिडक्शन को। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट प्लीज बी वेरी केयरफुल। जब आपको बेनिफिट दिखाना होता है, अगर आप कहें कि जी आप सारे लोग ये स्टेटिन खाएं, 1% को फायदा होगा, तो हाउ मेनी पीपल वुड बाय एन एक्सपेंसिव ड्रग जिसमें माइल्जियाज भी हो रहे हैं, कुछ के न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, मेमोरी डिस्टर्बेंस हो रही है, लिवर एंजाइम्स खराब हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो। इनफैक्ट बीएमजे का एक है, वो मैंने इधर डाला नहीं रेफरेंस के, दैट शोड के जितने लोग भी दुनिया में स्टेटिन्स ले रहे हैं, the conclusion was only 1 out of 140 human beings is deriving any, who is taking statin is deriving any benefit at all from statin, and that too only a marginal benefit. ये वो चीज है जो मैंने कहा कि जो छोटी सी एब्सोल्यूट रिस्क थी, उसको इतनी बड़ी एग्जेजरेटेड रिलेटिव रिस्क में इतना बड़ा फिगर। सो एब्सोल्यूट रिस्क या वो छोटी सी डार्क ब्लू है, रिलेटिव रिस्क में जाए तो इतने बड़े बार्स बन जाते हैं और फिर मार्केटिंग आसान हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट
आपको बताया कि 1.1% की जो एब्सोल्यूट रिस्क थी उसको रिलेटिव रिस्क ऑफ 36% बोल के इसकी मार्केटिंग की। तो ये जो राइट पे था, अगर एक्चुअल रिस्क रिडक्शन होती, ये लेफ्ट पे जो है 1% होती, तो उसमें किसने खरीदनी थी? और ये अगर if you would like to, I'll at the end give you some references. I know there would be a bit of biochemistry and all that, लेकिन ये उन्होंने सारा ये जो कि ये क्या डिसेप्शन है उसकी सेफ्टी के बारे में और exaggerated claims. And David Diamond is at University of South Florida and he is a research का professor. He is a big influence in United States on these matters. अब ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि देखें नेट इनकम जो है एज 20 साल पहले फाइजर की लिपिटॉर के बेचने से एक क्वार्टर में नेट इनकम 28% बनी एंड even 20 years ago it had become in history of medicine the world's best selling drug at that point in time. और आज का अगर आप पूछें तो $19 बिलियन की वर्ल्ड वाइड स्टेटिन्स की सेल्स। इफ यू आस्क मी, आई हैव स्ट्रगल कि किसको स्टेटिन प्रिस्क्राइब किया जाए, क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज जब आप स्टेटिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आर यू नॉट इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी? एंड लेट मी टेल यू, एक चीज है ये जो आजकल हमारा ज्यादा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की स्क्रीनिंग होती है तो सीटी एनजीओ की कराया जाता है। आप जानते हैं कि वो कैल्शियम पिकअप करता है। Now, calcium is what gets deposited in chronic inflammatory states as time goes by. And higher the calcium score chances होता है उतनी chronic और गालबन मैग्नीट्यूड में coronary artery disease ज्यादा है, and वो ज्यादा stable हो जाती फिर गायब नहीं होगी। Do you know what causes calcification of atherosclerotic plaques? Much that I have tried to study over the last 20 years, there is only one factor that I know which leads to calcification of plaques and their permanentization. You know what is that? Statins. Statins करते क्योंकि वो vitamin K1, K2 या आपकी don't want to go into biochemistry, तो calcification और जो plaques है वो actually statins के लेने से ज्यादा होती है। And what about that systematic review जो मैंने BMJ में बताया कि 18 studies के कि all cause mortality increases when you lower LDL cholesterol. And here you are, the expert review again, David Diamond Group का कि it does not cause cardiovascular disease और ये 2020 का 2018 का। So yeah, there are, it's not, I've just put in a few of world-renowned authorities meta-analysis or systematic review slides, but you know literature is full of this. What upsets me is ये सारी एविडेंस वगैरह डाई कास्ट होगी, यूएसटी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी 7 साल पहले कह दिया, तो बट व्हाई स्टेटिन्स कंटिन्यू टू बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वो द सेल्स आर राइजिंग। सो व्हाट इज दिस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज? पहली बात, एथेरोस्क्लेरोसिस इज बेसिकली अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी जो ब्रैडफोर्ड हिल क्राइटेरिया है कॉजेलिटी का, cholesterol never satisfied that criteria biochemically or epidemiologically. It was never proven कि cholesterol से atherosclerosis होती है। एक वो inflammatory disease है, what brings in this chronic inflammation जिससे atherosclerosis होती है? Well, ladies and gentlemen, it is insulin resistance. So whether it is diabetics, which is about variable estimates है, शायद 10 से लेके 20% इंसानियत, and the numbers are rising, जितनी detection ज़्यादा हो रही are diabetic. Another 40-45% are pre-diabetic. They are all insulin resistant. Majority of humanity is insulin resistant. और another 10-20-15% अगर वो एक हद से ज़्यादा starch लेंगे, glucose लेंगे, तो उनमें भी insulin resistance आने लग जाता है। You know what is insulin resistance? इंसुलिन रेजिस्टेंस मींस आप जानते हैं कि जब हम ग्लूकोज लेते हैं या स्टार्च खाते हैं व्हिच इज रेडिली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी, नो अगर उसको फ्यूल के तौर पे सेल्स ने यूज करने, यू नीड इंसुलिन टू इंटरनलाइज फ्लोटिंग ब्लड ग्लूकोज इनटू द सेल्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज व्हाट द सेल डेवलप्स टू ट्राई टू डेवलप अ डिफेंस के खुदा के लिए
आपने मेरी मत मार दी है 3rd क्लास एनर्जी फ्यूल ग्लूकोज दे के, और मुझे बचाओ कि मेरे माइटोकॉन्ड्रिया और मेरे सारे मैकेनिज्म, ग्लाइकेशन ऑफ माय प्रोटीन्स, ये वो हो रही है, मुझे कोई काम का फ्यूल दो. Which if you want to know, it's beyond the scope of today's lecture. Actually जिन चीजों को हमने बंद कराया, एनिमल फैट्स, probably देसी घी is the best type of एनिमल फैट. अंग्रेज लाड यूज करते हैं, हमारे देसी घी या बटर जिसमें कराएं तो जिसमें किसी सारे कोलेस्ट्रॉल रिच. बाय द वे, इसके ऊपर भी मैं आपका कहता हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल रिचनेस, जैसे पहले अभी मैंने क्लियर कर दिया, दैट इज नॉट बैड. इफ यू लुक एट, ये मैंने आपसे बात कर ली कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लगता है 80-85% ह्यूमैनिटी को किसी मैग्नीट्यूड का है. टाइप 2 डायबिटिक्स में सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कंप्लीट डायबिटिक और 10-15% और इंसानों में. इट अपेयर्स अबाउट 15% ऑफ ह्यूमैनिटी हैज दो जीनो फिनोटाइप के उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस. और वो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, इंसुलिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है. इंसुलिन इटसेल्फ इज प्रो इन्फ्लेमेटरी, but when in presence of insulin resistance, body secretes insulin. It's not only insulin that comes up in higher value, a lot of other interleukins, blah blah, lot of other pro-inflammatory molecules are also secreted, और ये chronic inflammatory disease करते हैं. If you look at this, please take a look at this. ये जो जितनी non-communicable diseases हैं, उसके underlying chronic inflammation होती है, और ये सारी उसकी atherosclerosis, hypertension, diabetes type 2 as such also, तो वो भी perpetuate होती जाती. Autoimmune diseases, lot of allergies, many types of cancers, and dementia और autism से भी लिंक आ रहा है. पहले कहते थे कि 1 in 67 लाइफ बर्थ में ऑटिज्म होता है. अब यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है कि जी हर 11वें बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, बिकॉज एवरीबॉडी जब उसकी भी वीनिंग होती है फूड से, उसको स्टार्ची फूड्स हम देते हैं. डिमेंशिया का कहते थे कि ये अबाउट 15-20% ऑफ अमेरिकन्स विल डेवलप डिमेंशिया. नाउ दे से दे वरी एवरी अमेरिकन इज गोइंग टू डेवलप डिमेंशिया, क्योंकि स्टार्च इंटेक प्रॉब्ली दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन है. लास्ट ईयर 41 मिलियन पीपल डाइड, और ये तकरीबन एनुअल है कि ये WHO डेटा कि 41 मिलियन पीपल डाई इन अ ईयर. Over 70% die because of non-communicable disease. So if you ask me, it is actually sugar and starch which are the main culprit. But sugar is that the one weapon of mass destruction that humanity invented is glucose, purification of glucose, usko concentrated or large doses में लेना. We don't know today what is the safe upper limit of daily dose for everybody जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगा. और well, there are, अगर आप कीटो डाइट को स्टडी करें तो उसमें कहते हैं 25 ग्राम पर डे से ज्यादा का आपका इंटेक नहीं होना चाहिए. You see, the problem is this is when I was a medical student. तो एक हमारे बड़े मोहतरम, और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, जनरल महमूद अख्तर, a very humble, legendary, hard working physician. ये उनका बड़ा फ्रीक्वेंटली कोट करते थे कि डॉक्टर्स पुट ड्रग्स ऑफ विच दे नो लिटिल, और वो देखें कि वो हम उनको देते हैं कि, और वो किस चीज के लिए हम देते हैं, इनटू द बॉडीज ऑफ विच दे नो इवन लेस. मरीज के ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग की कितनी हमारी नॉलेज है, एंड फॉर डिजीजेस ऑफ विच दे नो नथिंग एट ऑल. That was true then, it is true today. And I've just given you an illustrative example of how much did we know कि ये जो दवाई दे रहे हैं ये क्या कर रही. 30% को साइड इफेक्ट दे रही है, 1% से ज्यादा को बेनिफिट नहीं, और उसके ऊपर टिका के दुनिया में इकोनॉमी बनी हुई है. एंड डिजीज प्रोसेस हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रहा है, व्हिच इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और वही जो स्टेटिन दे रहे हैं वो प्लाक की बल्कि कैल्सिफिकेशन कर रहा है. तो दैट इज वेरी पेनफुल. मैंने एक स्लाइड छोड़ दी कि उसमें यह था कि इफ यू लुक एट इट, यू नो, दिस इज नॉट द ओनली कि स्टेटिन्स प्रिस्क्राइब करते, हम करते हैं एंजियोप्लास्टी. ओके, इफ यू गॉट सिवियर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज 70% से ज्यादा तो स्टेंट डाल देते. इज इट रिक्वायर्ड? आप करेज स्टडी जो कि हार्वर्ड से आई थी, और माइक बोगन वाज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, वेरी सेलिब्रेटेड कार्डियोलॉजिस्ट थे, और ये नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा वगैरह के उन्होंने सारे
जो कार्डियक सेंटर्स हैं उनका एनालिसिस किया एंजियोप्लास्टी का कि वो क्या जो प्रिस्क्राइब्ड इंडिकेशन है उसके मुताबिक हो रही है कि नहीं। एंड करेज स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ओपन सोर्स है 2007 में गालबन पब्लिश हुई थी, which showed that more than 80% of angioplasties carried out in United States at that point in time was superfluous. It is easy to sell it to people. देखो यार 70% आर्टरी बंद हो गई है, आगे कुछ हो ना जाए. All data including courage study showed अगर आपके पास सिवियर ट्रिपल वेसल डिजीज भी है, यानी कि तीनों आर्टरीज 70% से ज्यादा है, अगर आप उसकी एंजियोप्लास्टी कर दें या आप उसको कुछ भी ना करें, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रखें, एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में बेहतर है. बिकॉज जब आप एंजियोप्लास्टी करते हैं उस वक्त थोड़ा सा था कि वो क्योंकि क्रैक करते हैं प्लाक को, उसे अनस्टेबल करते हैं, तो एक्चुअली चांसेस ऑफ एक्यूट कॉर्नरी इवेंट are increased after angioplasty. No, angioplasty is important. As a primary angioplasty, जो plaque disrupt हुआ, thrombus आ रहा है, उसको primary angioplasty के तौर पर, should it be done electively? और ये वो चीजें कि how economy drives our hearts and souls, and they are बड़ा serious. To me, it's painful because joining cardiology, I was a fourth year medical student when I became very passionate about cardiology. But my journey through cardiology and its clinical practice, I'm sorry, has been very painful. देखिए ये जो चीजें कि we need to look at our limitations. तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये होना चाहिए how well trained are we, not to do, how well trained are we the physicians at really understanding research methodology. अब वो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा, उसमें से नादिर अली का आप जाके कि आर स्टेटिन्स द कॉज और एक्चुअली आर द क्योर और द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, तो उसको जरूर वो 31 मिनट 50 सेकंड का आपको यूट्यूब में मिल जाएगा. प्लीज डू रीड, डू लिसन टू दैट लेक्चर, एंड आई प्रिस्क्राइब दैट टू एवरी कार्डियोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि प्लीज उसको सुन ले. वो उसमें सारा चट्ठा बट्ठा जिसको which was beyond the scope of my today's lecture, वो सारा बताएगा कि ये किस तरह से इसकी इंजीनियरिंग होती है और ये सारा वो रिसर्च हाउ इट इज मैनेज्ड ऑल दैट. बट न्यूट्रिशन, वो कहते हैं लेट फूड बी दाई मेडिसिन. चाइनीज हर्बल ट्रेडिशनल, हमारी आयुर्वेदिक, सारी दुनिया में क्या वो बीमार थे लोग जो ज्यादा, हम कहते हैं वो बाबा जी वगैरह 80-90 साल की उम्र तक फिट जाते थे, हम जो है 40-50 साल में हार्ट अटैक्स करा लेते. Nutrition is a subject that is not taught to doctors. And don't tell me nutrition is rightly taught to nutritionists. Sorry to say, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट कौन होते हैं? जब एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, फर्स्ट डिवीजन अच्छे नंबर है, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, बाकी डेंटल में. अब नर्सिंग में भी बैचलर्स आया, वो नर्सेस बन जाती हैं जो अफोर्ड ना कर सके मेडिकल, कुछ अलाइड हेल्थ प्रोफेशन. न्यूट्रिशन में कौन चाहते हैं? और उन्हें क्या, मेरे ओवर माय करियर आर्म्ड फोर्सेस में, वेदर एट AFIC और वाइल एट GHQ as सर्जन जनरल, आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल, व्हेन आई एंडेवर्ड कि न्यूट्रिशनिस्ट को लाएं, अपनी यूनिवर्सिटी जब बनाई और उसमें न्यूट्रिशन का डिपार्टमेंट, आई एम सॉरी टू से सम ऑफ द वीकेस्ट एंड लीस्ट नॉलेजेबल न्यूट्रिशन के बारे में पता ही कोई. एंड दैट मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा था, एंड आई वाज अमेज्ड कि उसमें जो एंकर ने आते साथ ओपनिंग की थी कि एक नॉन डॉक्टर थॉमस एल्वा एडिसन, ये जिसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया अबाउट 100 years ago, 1924 या कब, he said कि ये डॉक्टर्स को they will realize one day that the reason for all or most of the diseases is wrong nutrition and the treatment resides in correcting the nutrition. एंड ये बताएं, आप सब, हम सारे मेडिकल प्रोफेशन में से गुजरे, हम सब ने मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट, हाउ मेनी ऑफ अस वर एक्चुअली डिलीवर्ड वन लेक्चर टोटली डेडिकेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस? ये मैं हार्वर्ड आगे पीछे बड़ी जगह मेडिकल स्कूल में फिरता रहा, फॉर्मली इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अलग से लेक्चर मेरे इल्म में नहीं, इज अ रेयर कमोडिटी. द बिगेस्ट रीजन for disease and suffering of humanity is insulin resistance. I'll try to stop here क्योंकि बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी.
and I've tried to keep it simple. And you see, this is the problem. कि Albert Einstein जुबान निकाल के वो बात कर रहा है कि you know it is easier to fool people, and when the industry has fooled people, क्योंकि अमेरिका से आ गया, टाइम मैगजीन में आ गया, सारे सजदे में चले गए, बांट रहे. Now, how do we convince them that they have been fooled? He says it's easier to fool them, very difficult to convince them that they have been fooled. So if we would like not to be fooled, I would like to give you some names. जिनके साथ मेरा over the years, I think they are the leaders behind this movement world over. And the food for thought इसमें, whether it is nutrition, whether it is cholesterol myth, और आपने जितने दुनिया जहाँ के references और evidence based और ये industry क्या करती है, and these are some of the very respected names in the profession. Professor Tim Noakes के ऊपर तो बड़ी इसके पीछे तो माफिया पड़ गई थी, 3.5 साल मुकदमे, and honorably extricated from University of Cape Town में sports medicine performance का medicine का ये professor है, very legendary. Nadir Ali that I mentioned, he's an interventional cardiologist. He's a professor. He's a head of Lakeland, Lakeview University of Houston. Look what he talks about statins and all. Robert Lustig, he actually pediatric endocrinologist, one of the most knowledgeable people that I've known in my life. University of California, San Diego. Stephen Finney, UC Davis. डेविड डायमंड, ये भी इसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, ओ एक्स्ट्रा आ गया फ्लोरिडा. बट इफ यू फॉरगेट ऑल दैट, प्लीज यूट्यूब में जाएं, लो कार्ब डाउन अंडर, उसमें ये सारे ऊपर वाले बंदे और आपको बहुत से रेफरेंस मिल जाएंगे. What I have given you is merely the tip of the iceberg that I've exposed you to. और इस सारे में जितनी मैंने बातें की वो और उससे ज्यादा सख्त डिटेल्स आपको ये सारी की सारी मिल जाएगी. आजकल तो देखे ना, वो रिटन वर्ड आई सस्पेक्ट इज देयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल टेक अ बैक सीट और ज्यादा चीजें ऑडियो विजुअल में चली जाएंगी. सो दिस इज द ईरा ऑफ सोशल मीडिया एंड यूट्यूब. सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई होप आई फिनिश्ड इन टाइम के वो 45 मिनट जो दिए थे, एंड आई होप आई हैव टच्ड सम nerve and some hearts and souls here. So please, if there is any question, query, please feel free to ask. Assalamu alaikum, sir. I've raised hand. Can I ask a question? Ji, please. So first of all, बहुत interesting और बहुत मजेदार lecture था. Thank you so much for sharing such wonderful information. सर, ये जो आपने अपनी सेकंड और थर्ड स्लाइड में बात की ना, वही स्टडी जो 7 country स्टडी एंड हाउ फॉल्सिफाइड दैट वाज, मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहती, क्योंकि एज डॉक्टर्स आपने सही कहा, हम रिसर्चर्स नहीं हैं और यही हमारा एरिया है जहाँ पे हम लैग बिहाइंड करते हैं कि व्हेन वी प्लान अ रिसर्च हमें सही मेथोडोलॉजी पता नहीं होती. और हमें जो चीज डॉक्टर जोबिया, मैं 1 मिनट आपका सवाल होल्ड कर दूं, इजाजत है? मैं 1 मिनट के लिए मैं अगर उससे आज के पैनलिस्ट से भी थोड़ा सा वो ले लूं, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर माजरत के साथ. जी तहसीन. जी तहसीन, डॉक्टर तहसीन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी डॉक्टर तहसीन, जी. First of all, sir, thank you so much for giving me the opportunity to be here. और सर इमरान मजीद का बहुत बहुत शुक्रिया. सर इमरान मजीद हमारी हाउस जॉब से समझ लें कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है, हमारी कार्डियोलॉजी की. हमेशा से इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. और सर ने बहुत ही वंडरफुल किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की. और टोटली एग्री विद सर के रिसर्च नहीं करते हम लोग, जो कुछ बस बताया जाता है, सिखाया जाता है, उन्हीं पे चलते रहते हैं. तो यहाँ पे लेग भी एंड करते हैं. और डेफिनेटली वी नीड टू गेट इनटू ऑल दिस और अपने लिए चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करके और अपने आइडियाज़ और कुछ चीज़ें मतलब रिसर्च की तरफ जाना चाहिए. इन शॉर्ट ये कि सर ने बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की और एक नया वे ऑफ थिंकिंग दिया हमें सर. जी थैंक यू. डॉक्टर जोबिया, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कंटिन्यू. If anybody want to ask a question, raise the hand. जी डॉक्टर जोबिया इफ्तिखार. थैंक यू सर. I'll carry on. सर मैं यही बात करी थी कि जब हम रिसर्च प्लान करते हैं तो हम बिकॉज
ये एरिया हमारा इतना स्पेशलाइज नहीं है, तो हमें स्टेटिस्टिशियन को कंसल्ट करना पड़ता है अपना सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हमारे जो स्टेटिस्टिशियंस हैं वो भी एट टाइम्स, क्योंकि रिसर्चर का और स्टेटिस्टिशियन का सेम पेज पे होना भी बड़ा जरूरी होता है कि उसको समझ में आ सके, बिकॉज एक चीज जो सुन रखी है और जो खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि द फर्स्ट थिंग दैट pops up in their head and they ask you, okay, what do you want, whether you want it to be proved or disproved, because they are expert at doing both things. जी सर, जी सर। देखिए Zobia, can I respond to what Zobia has highlighted? Zobia is assistant professor of anatomy at AJKMC Medical College, Muzaffarabad, sir. Fine, thank you. Let me respond to, I think Dr. Zobia ने बड़ी अहम बात की है. Again, it is something that is very close to our hearts. You see, when there is an issue, I don't want to be overly critical of any entity. वो सारी चीजें हमारी हैं. College of Physicians and Surgeons जिससे हमने अपनी फेलोशिप की थी, देखिए उसमें हमने एक मिसकॉन्सेप्शन, सॉरी टू से, फैलाने की कोशिश की है बाय ट्राइंग टू से कि ये जो डिसर्टेशन लेते हैं उससे हमें मिसकॉन्सेप्शन आता है, अच्छा जी मैं रिसर्चर बन गया. बिकॉज वेरी अनफेयरली इन द पास्ट at Higher Education Commission, it had been frequently touted and argued by CPSP कि जी आप हमें PhD के बराबर रखें. I have my own views कि PhD रिसर्च है, रिसर्च को क्लिनिकल वर्क से इक्वेट ना करें, वो कुछ और चीज है या कोई और चीज है. बट लेट अस नॉट क्लेम टू बी कि मैं अगर डिसर्टेशन लिखता हूँ तो मैं रिसर्चर बन जाता हूँ. ना रिसर्च मेथोडोलॉजी किसी को पढ़ानी आती. Okay, I'm very pained on research methodology. It was in 1990 that I got passionate about research. मैं St. George's में लंदन में था into electrophysiological research and passionately उसको pursue करता था. And I realized कि हमें तो सर पैर नहीं पता. And you really, देखिए PhD is not a higher degree. As far as I am concerned, it is the KG class, kindergarten of research. उधर से तो काम शुरू होता है, फिर पोस्ट डॉक करते, फिर आगे लेके चलते. हमने डॉक्टर्स, वी आर क्लिनिशियंस, वी आर नॉट साइंटिस्ट. अब एक रिवाज आ रहा है दुनिया में तो ये जो एकेडेमिया के हेड्स हैं मेडिकल प्रोफेशन के, दे शुड टेक द डुअल रोल, दे शुड बिकम क्लिनिशियन साइंटिस्ट. एंड आई एम वेरी प्लीज, मैंने उसी इंग्लैंड में आई ऑल्सो एनरोल्ड फॉर वो PhD के लिए 1990 में. उससे बड़ा रेयर था कि कोई क्लिनिशियन जाए, लोग परेशान होते थे, मुझे भी कंप्लीट नहीं करने दी गई, वापस बुला लिया गया. बट एनीवे, बट व्हाट आई फाइंड नाउ इज कि देयर इज एन एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कि बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं बाहर, उन्हें कहते हैं कि जी अगर आपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना है, ओके यू आर ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ए कार्डियोलॉजिस्ट, बट यू मस्ट डू अ PhD आल्सो. सो और ये अभी भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन कैंपस, वहां पे उन्होंने क्लैरा स्कूल ऑफ मेडिसिन 2018 में स्टार्ट की. आई स्पेंट अबाउट वीक देयर विद देयर फैकल्टी एंड ब्ला ब्ला. उन्होंने बताया कि जी वी आर टोटली गोइंग टू चेंज द वे दैट वी एजुकेट पीपल एंड डेवलप लीडरशिप इन मेडिकल प्रोफेशन. और उन्होंने MBBS प्रोग्राम के साथ ही दे वुड टेक 42 स्टूडेंट्स, वेरी स्कॉलरशिप, इसलिए वेरी हाई मेरिट कम्स इन, और उनको डुअल डिग्री यानी कि MD PhD प्रोग्राम. So they would do their MD, they would do their PhD, they would go into their clinic और बेसिक साइंसेस स्पेशलिटी. और उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो रिसर्च को डिजाइन कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और ये जो ट्राइंग टू गेट दिस ऑल द चीज जो काबू की हुई है इंडस्ट्री ने, उसको वापस लेके आएंगे. इट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ यू नो अप टिल 1980. रोनाल्ड रेगन से पहले तक तो ये था कि जितनी भी रिसर्च होती थी हेल्थ की, वो यूनाइटेड स्टेट्स में उनका NIH फंड करता था. उन्होंने कहा कि जी आप इंडस्ट्री को दे दें, उनको ज्यादा बेनिफिट होता है. दैट्स रोनाल्ड रेगन चेंज द डिग्री. और उसके बाद जब इंडस्ट्री आ गई तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गई. वेल आई वुडंट लाइक टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दैट, बट नाउ देयर इज माइंड के आपको रिसर्च में आना चाहिए. पाकिस्तान में अब मेडिकल की यूनिवर्सिटीज बन गई एंड आई एम वेरी पेन्ड बाय दैट. यूनिवर्सिटी क्यों बनी? मोस्टली इट अपेयर्स कि जी हम अपने कॉलेज को ग्लोरीफाई किया, डिग्री भी हम छापेंगे. लेट मी टेल, यूनिवर्सिटी लेडीज एंड जेंटलमैन, उसका एजुकेशन की डिस्पेंसेशन इज अ वेरी सेकेंडरी लो फंक्शन. यूनिवर्सिटी का काम है क्रिएट नॉलेज, स्कूल कॉलेज का काम है डिस्पेंस नॉलेज.
और ये जो क्रिएट नॉलेज करनी होती है आपने तहकीक के थ्रू करनी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आउटकम्स ऑफ रिसर्च। आई विश के क्योंकि पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए थ्रू इट्स मेडिकल यूनिवर्सिटीज। दिस इज वी आर ए लार्ज पॉपुलेशन, डिजीजेस की प्रेवलेंस ह्यूज है, तो हमें तो अगर हम रिसर्चर्स बन जाए तो हम तो दुनिया को बता सकते हैं। और दुनिया में बहुत से ममालिक में मेडिकल की एक्सक्लूसिवली यूनिवर्सिटीज नहीं है, पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज को तब मैं मानूंगा जब वो रिसर्च करेंगे। बाय द वे, जब ये नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज जब हमने स्टार्ट की एंड आई वाज देयर फॉर ओवर 6 years, तो उसमें वी एक्चुअली हैव स्टार्टेड इंडक्टिंग बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट एंड ऑल दैट, जो उसके 60-70 PhD एंड थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं आपके साथ एक इसी रिसर्च की जो मीटिंग थी और बिल्कुल हमने यही डिसाइड किया था, द नॉलेज no doubt can come from the colleges, but the creativity must be through the university, and research is one of the best creativity, inshallah. Now doctor, another question of doctor who has Rashid. Professor Rashid is the professor of physiology. You have asked the question, sir. You can ask the question now. थैंक यू मुलाजिम साहब। इमरान मजीद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत आपने एनलाइटन कर दिया। मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी के अलावा जनरल प्रैक्टिशनर भी हूँ 30 ईयर से, और मेरी भी कुछ रिजर्वेशंस थी बहुत। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक आयल के बारे में, जी ये वाला घी यूज ना करें, आयल यूज करें, ये फलाना आयल यूज करें, फलाना आयल यूज करें, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बता दें। और दूसरा, एक जो एस्प्रिन का यूज है वो भी कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इन 2 चीजों के बारे में जरा बता दें। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। थैंक यू वेरी मच, अगेन वेरी रेलिवेंट। शॉर्ट आंसर्स दूंगा ताकि और लोग भी अपने सवाल पूछ सके। नंबर 1, ऑयल्स। सो लेट मी टेल यू, जितनी भी बॉडी ऑफ एविडेंस है उसके लिहाज से द बेस्ट ऑयल्स आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। देखिए उसमें ओमेगा 6 कम होता है, ओमेगा 3 ज्यादा होता है। और उसकी जब ये फिर आई डोंट वांट टू गो इनटू बायोकेमिस्ट्री, यू सी द बेस्ट फ्यूल फॉर द सेल्स इज नॉट ग्लूकोज। ओनली रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर ग्लूकोज मैंडेटरली, बाकी सारे फैटी एसिड से और शॉर्ट चेन फैटी एसिड और वो सारी बात जो है जो गट माइक्रोब्स ही बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आपके फैटी एसिड्स के ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा आता है, और जब वो मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं उसमें कोई प्रो इन्फ्लेमेशन नहीं आ रही। सो ग्लूकोज जो है उसके ऊपर हाउ मच ग्लूकोज डू यू रिक्वायर फॉर रेड सेल्स टू फंक्शन नॉर्मली? वेल, हार्वर्ड की एक स्टडी, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इवन जो सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया में हो, जिनका 30 से ब्लड ग्लूकोज नीचे, उनके रेड सेल्स ठीक फंक्शन कर रहे होते हैं। इफ यू वुड गिव अवे ग्लूकोज एंड स्टार्च 100%, आपके ख्याल में आपकी ब्लड ग्लूकोज को क्या होगा? वो 0 हो जाएगी? नो, वो 70 के ऊपर जाके प्लेटू कर जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जितनी बॉडी को चाहिए वो भी अपनी बना लेगी। ब्लड ब्रेन बैरियर को फैटी एसिड्स क्रॉस नहीं करते, बट कीटोन बॉडीज डू। सो व्हेन यू गो इनटू डोमिनेंटली अ कीटो fatty diet and animal proteins and green leafy vegetables and all that, keeping your starch below 25 grams, तो body ketone bodies बनाती। This is not ketoacidosis. उसमें तो 20 नैनोमोल पर लीटर के ऊपर कीटोन बॉडीज जाती हैं। व्हेन यू आर इन न्यूट्रिशनल कीटोसिस, जो फास्टिंग और सब में भी होता है, तो आपकी 2 to 5 के दरमियान जाती हैं, और कीटोन बॉडीज क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये फिर बियॉन्ड स्कोप हो जाएगा कि ब्रेन का फंक्शन कितना बेहतर हो जाता है, rather than metabolizing glucose when it is metabolizing ketone bodies. और उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी कम होती है, स्लीप बेहतर हो जाती है, ब्ला ब्ला। ऑयल्स की बात में तो एक तो हो गया कि इन डिफेंस ऑफ एनिमल ऑयल्स, तो देसी घी इज द बेस्ट, बटर में भी कुक किया जा सकता है। वेजिटेबल ऑयल्स बड़ी लंबी बात हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज दे हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 ठीक है। नो, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशियो जो है 2 जनरली ऑयल्स में बेहतर है, ऑलिव ऑयल एंड जो हमारे टेस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में होता है कोकोनट ऑयल। बाकी फैंसी हैं एवोकेडो ऑयल एंड ऑल दैट, मैकेडेमिया ऑयल, और वो बहुत महंगे भी, बट ऑलिव ऑयल, ऑल अदर ऑयल्स दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड, दे हैव प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लुएंस है, उसमें ओमेगा 6 ज्यादा है, ओमेगा 3 कम है।
ये तो एक हो गया ऑयल्स के बारे में। एस्पिरिन, देखें एस्पिरिन की जो स्टडी है, दिस केम इन, यू रिमेंबर इन 1970s 1980s, जब स्टेटिन्स नहीं थे, कोलेस्ट्रॉल में फिर भी थी, वो तो डर था कि जी जब प्लाक अनस्टेबल हो जाता है और क्लॉट बनता है तो उसमें क्लॉट आर्टरी को बंद कर दे। उसमें पिल इन पॉकेट इज अ बेस्ट गुड अप्रोच। प्लीज लुक एट दिस, जब किसी का एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, फैटी स्ट्रीक टीनेज में बननी शुरू होती है, सारी 50-60 साल उसके प्लाक्स पड़े रहते हैं, क्या उसको रोजाना हार्ट अटैक? What are the chances of a plaque destabilizing over a lifetime? एक, दो या तीन दफा मैक्सिमम लाइफ टाइम चांस है फॉर दोज फ्यू सेकंड्स के प्लाक अनस्टेबल होगा। तो क्या आप सुबह दोपहर शाम या डेली आप एस्पिरिन खा के उसका सत्यानाश करते रहेंगे, उसकी एसिडिटी, गट की इरोजन और वो जो इनसेंसिबल आरबीसी लॉस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करते रहेंगे? और ख्वातीन में तो आप भी जानते हैं ये कभी प्रूव ही नहीं हुआ था उसका बेनिफिट। तो ये एक चीज थी कि मरता क्या ना करता, तो एस्पिरिन आ गई। फिर अगर आपको याद हो तो एस्पिरिन का यूज आया था कि वो आइसिस 3 और गिजी स्टडी में कि आपको जो एक्यूट इन्फेक्शन जब हो रहा होता है या प्लाक अनस्टेबल होता है तो 24% मोर्टेलिटी रिडक्शन है बाय टेकिंग एस्पिरिन। बट ये नहीं कि जो माजी में कब से कहा था, आप उसी टाइम पे एक सॉल्युबल एस्पिरिन ले सकते हैं। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग एडवोकेट of taking aspirin perpetually for always. चना साहब, आज तो आपने सारे ऑयल भी हमारे बंद करा दिए और एस्पिरिन भी बंद करा दिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, मुबशिर इफ्तिखार फ्रॉम मलेशिया। डॉक्टर मुबशिर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। डॉक्टर मुबशिर फ्रॉम मलेशिया, कुआलालंपुर। जी डॉक्टर मुबशिर, डॉक्टर मुबशिर इफ्तिखार। Sir, can you hear me? Yes. जी, Assalamu alaikum, sir. Very nice topic and very enlightening. I'm a medical doctor, but in digitalization of medical education and healthcare, and I take care of an EHR, electronic health record. So I was interested to know, sir, आपने कोई ऐसी study conduct की है which is related to data gathering from machine or computers or through a data which is keyed in to tell about these implications of heart diseases with food or heart diseases with lifestyle in Pakistan? क्योंकि वेस्ट में तो सर ये बहुत ज्यादा है, तो अगर हमारे पास अपनी, क्योंकि वो ज्यादा दे आर मोर क्लोजर टू रियलिटी एंड रियल गैदर, और बायस भी कम है उनमें। Thank you so much. ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके, but again something that I'm very passionate about. I believe कि कॉस्ट एफिकेसी जो रिसर्च की है वो बहुत बढ़ जाएगी और आपके सैंपल साइजेस भी ह्यूज हो जाएंगे, सर्वेज बड़े मुमकिन हो जाएंगे बड़े स्केल के ऊपर by bringing digital technology into research. One, और also using AI methodologies उसके एनालिसिस वगैरह करने में। अदर देन दिस भी बात बड़ी लंबी हो जाएगी जिसमें अगर टॉपिक से हटके होगी, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये जो अगर आपने रिसर्च में आईटी को लेके आए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके आए, तो ये बहुत सी चीजें माजी में डेटा कलेक्शन से लेके डेटा एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन वगैरह तक, you know, all this will become. So this is very exciting times that we are living. Well, my generation is finally transiting and handing the baton over to the next generation. तो इंशाल्लाह जो अगली जनरेशन है वो बहुत बेहतर हालात तहकीक के और उसके सही रिजल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन और उसकी डिसेमिनेशन इंशाल्लाह देगी। So hats off to people like you who are doctors and they are into digital technology. Thank you very much, Dr. Mubashir Iftihar. आपका हमने एक लेक्चर भी सुना। Anybody can ask the question from Bahawalpur side? I think Professor Wajir Rahman is there, Professor Afzal Farooq is there, Jamil Sabit is there. Can you ask question? You can unmute your mic and you can ask the question. This is Jamil Sabit from Lahore. Yes,
Basically you belong to Bahawalpur. Yes, I belong to from I'm Thank you. Kajian Thank you. U10 Thank you, and Jamil Sabir. from Bhavnagar. Yes. I'm an anesthesiologist and doing pain interventions in Lahore since 2007. Thank Yes, you very you can much. ask. Yes, there's not any. There's only comments from my side. This is really very enlightening and very informative talk delivered by the worthy cardiologist. And I was a bit late to join, but I really find it very informative and even giving good hints for prevention and of these cardiac diseases. I really congratulate you, especially who are just doing. You and your team are doing a wonderful job for arranging such wonderful meetings. I really appreciate. I would like to join again also in the future. Thank you very much. सर एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा जाती क्वेश्चन है सर, मुझे ये बताएं व्हाट इज द रोल ऑफ सर एक्सरसाइज इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन सर, ये खास तौर पे कोरोनरी आर्टरीज की और दूसरी आर्टरीज की सर। देखिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड. When we exercise, we secrete lot of nitric oxide in muscles and so on and so forth. And you know, this is a very good vasodilator also. और ये endothelial health के लिए होता है. Now, this is not the only benefit, लेकिन हम क्योंकि cardiovascular और arteries की बात कर रहे थे. और अगेन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सी ग्लूकोज जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मैकेनिज्म से भी डायरेक्ट मेटाबोलाइज कर सकते हैं. और फाइनली ये भी होता है कि एक्सरसाइज से कि वो जो क्योंकि वेस्कुलर जो है ना आपकी क्या कहते हैं नियोवेस्कुलराइजेशन नॉट ऑफ नेगेटिव टाइप पॉजिटिव टाइप कि वो वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है मसल्स की भी इंक्लूडिंग हार्ट मसल. सो अगर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स की हम बात करें सो कार्डियोवेस्कुलर एंड ओवरऑल हेल्थ well again you know it's a huge topic and goes absolutely without saying कि उसके extreme benefits होते हैं. I do not know if I can just make one comment more. मुझे थोड़ी हैरत हो रही है, शायद मैं कोई स्लाइड मिस कर गया था या क्विकली स्किप कर गया. I wanted to show you कि ये जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, एक्चुअली ये इसका पार्टिकल, ये LDL कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है and it carries fat to the cells and cholesterol. And you know every cell की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है और मेटाबॉलिज्म के लिए फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं. तो एलडीएल का पार्टिकल एक बड़े साइज का बनता है, व्हाट इज कॉल्ड टाइप ए पार्टिकल. उसी से मसल्स, उसी से इम्यून सेल्स और बॉडी के बेशुमार फंक्शंस हैं जो कि वो उससे अपनी एनर्जी का वो मटेरियल डिराइव करते हैं. और जब ये हो जाता है तो वो जो छोटा पार्टिकल रह जाता है वो वापस लिवर टेकअप कर लेता है, फिर बड़ा पार्टिकल करता जाता है. ये जो कंफ्यूजन आती है और कभी कुछ स्टडीज में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कोरिलेशन आया, दैट एक्चुअली इज स्मॉल पार्टिकल एलडीएल. नाउ देयर इज नो क्लिनिकली अवेलेबल आउटसाइड रिसर्च डोमेन टेस्ट के आपकी एलडीएल लार्ज पार्टिकल टाइप ए एलडीएल है या स्मॉल पार्टिकल टाइप बी है. Now, type B is the dysmorphic type of LDL particle. It is inflammation, free oxygen radicals, and so forth, जो कि उसको और and glycation. Glycation non-enzymatic होती है. जितनी blood glucose high है, उतना large particle, small dysfunctional particle में हो जाएगा. और अगर कहीं correlation है और causality में कोई role आता है LDL cholesterol का एथेरोस्क्लेरोसिस में, it is that this dysfunctional small particle LDL cholesterol. ये जब हम डाइट लेते हैं, by the way, एनिमल फूड और जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आती है, this is all leads to large particle LDL cholesterol synthesis. ये प्लीज एक नोट कर लीजिए. थैंक यू सर मच. सर ये करंट सिचुएशन में एक जब पाकिस्तान में कोई मैच हो रहे होते हैं वर्ल्ड के कप के या सर इस तरह सियासी आलूदगी होती है तो ये दिल पे क्या असर करते हैं सर? यू मीन कि वो जो दो चीजें होती हैं ना, एक तो एड्रेनलिन बड़ी सिक्रीट हो रही होती है और स्ट्रेस हार्मोन के नेगेटिव इफेक्ट्स. एंड नेगेटिव में प्लीज नो दिस, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी एडमिनिस्टर कर रहे थे ऑल दैट, तो उसके जो डिलीटीरियस इफेक्ट्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड सेल मेम्ब्रेन और इवन मायोसाइट्स में मसल्स की डिस्ट्रक्शन इफ लार्ज डोजेस ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड आर प्रोवाइडेड
तो ये सारा कुछ होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर दुश्मन की अगर कंपीटिंग जो है टीम की विकेट गिरती, आप खुश होते, तो उसमें एड्रेनलिन तो छोड़ें, आपके एंडोर्फिन्स, द प्लेजर हार्मोन, जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स जो हैं, वो भी सिक्रीट हो रहे होते हैं, एंड दे हैव अ थेरेप्यूटिक बेनिफिट आल्सो। सो दोनों की चीजें अमेजिश है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में ये देखना पड़ रहा है कि वो मैच आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। My take on this on a personal note is, I've learned one thing over life. It doesn't matter to me कि पाकिस्तान की टीम या मेरी टीम मेरे स्कूल की या कॉलेज की किससे खेल रही है. No, I do belong to Pakistan. I do belong to my college, my school, my institution, whatever. But I'm sorry. First of all, I belong to humanity, and I appreciate good performance. And if there is a better performance जो हमारी competing opposing team दे रही है, तो मेरी एड्रेनलिन नहीं सिक्रीट होती, तो मैं तो खुश होता हूँ कि इसने छक्का मारे बॉलर को, बड़ा अच्छा मारे. एंड व्हाई नॉट? दैट पॉजिटिव माइंडसेट डज हेल्प मी, माय एंडोर्फिन्स गो अप, और एड्रेनलिन इतनी सिक्रीट नहीं होती. तो मैं ख्याल में सोच का फैसला कर लें तो मैचेस भी देख सकते हैं बगैर तकलीफ. और ये सियासी आलूदगी में भी सारा रात ये व्हाट्सएप चलते रहते हैं सर. मेरे ख्याल में इसमें तो एंडोर्फिन कोई नहीं है. देखे ना, ये तो सारा एड्रेनलिन है, एंड ये चीज है. बट यू सी, ये बात पॉलिटिकल और वो हो जाएगी, बट आई जस्ट पास अ कमेंट. यू सी, पाकिस्तान मार्जे वजूद आया बेस्ड अपॉन ए मूवमेंट जो कि अलीगढ़ मूवमेंट थी, जिसमें अपनी सोच को बेहतर करने का था. आज भी हमें वो सोच चाहिए. अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया. सेक्रीफाइसेस जिन्होंने बंगालियों ने दी थी, विच लेड टू मुस्लिम लीग की क्रिएशन, वो अलग चले गए. और हमारे जो यहाँ पे डोमिनेंट यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसका एक धड़ा पीपीपी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ सिंध बन गई. हाउ मच वी ऑनेस्टली लिसन टू ईच अदर, आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड विद ईच अदर. शेख मुजीब भी बेचारे 18th अमेंडमेंट मांगता था, उसको उठा के धक्का मार के निकाल दी. तो इट इज अ टाइम फॉर अस टू इंट्रोस्पेक्ट. आई बिलीव, जैसे हमें डॉक्टरों की अभी बात, आई बिलीव, यू नो व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज नहीं. आई डोंट बिलीव देयर इज एनी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री. ये छापे खाने डिग्रियों के. यूनिवर्सिटी वो होती है जो डीप थिंकिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, फिलोसफीज पैदा करती है. वी नीड अ नेशनल आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी. वेरी राइट. अल्लाह ताला हमें हिदायत दे. Dr. Heather, you want to ask the question about the cardiac disease? Dr. Heather, you can unmute. This is the last question, and then I will hand over this mic to the president of PAP, Pakistan Medical Association, Professor Sarma Kundi, to conclude. Dr. Heather. जी सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सर. It's a very interesting and informative lecture. I am अपना हैदर पूरा क्वेश्चन, my name is Dr. क्वेश्चन पूछें. जी सर. I am Dr. Elia Heather from medical officer from Daw University Hospital, so from Karachi. तो ये जी मेरा बहुत छोटा सा और बहुत एक क्वेश्चन है, सिंपल सा. अच्छा, आप इतनी बड़ी अच्छी बात की कि न्यूट्रिशन से ही जो है वो डिजीज जैसे कॉज हो रही है, और जैसे आपने कोट भी किया कि न्यूट्रिशन ही कैन रिवर्ट बैक द डिजीज प्रोसेस. तो मैं वही पूछना चाह रहा था कि आप कुछ न्यूट्रिशन पे कमेंट करेंगे कि हार्ट डिजीज के लिए हमें कौन सी प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, लाइक हाई फाइबर डाइट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेनिंग, और एक जो चीज एक लोग ऐड करते हैं कोएंजाइम क्यू भी ऐड किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन. तो इस पे जरा अगर कोई कमेंट करें. गुड क्वेश्चन. Well, the answer required is encyclopedic in nature, but I'll just pass 2 comments. So I refer you all kindly कि वो जो मैंने आपको एक वेबसाइट YouTube बताया है, लो कार्ब डाउन अंडर, उसमें मैं थोड़ा 100% एग्री नहीं करता. व्हाट आई से इज कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड, बट ये जो सिंपल है, जो शुगर्स और स्टार्चेस, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए. तो यू कैन, आई वुड रेफर यू टू ऑल दोज डिटेल्स रेसिपीज जो कि उसमें लो कार्ब में बड़ी अच्छी डिस्कशन. हाउएवर, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हाई क्वालिटी के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, वो भी अगेन बियॉन्ड स्कोप हो जाएगा. व्हाट इज प्लांट की भी न्यूट्रिशन में देखें तो इट कम्स टू, उनकी लेवल भी है, लेवल 1 प्लांट, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. लेवल 1 क्विकली जो कि कॉम्प्लेक्स टोटल कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस कर पाता है. 2 इज प्रोटीन की. 3 इज जो फैट लिपिड सिंथेसिस, एंड दीज आर हेल्दी प्लांट्स जिनके पत्तों में बड़ी शाइन होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ वैक्सेस एंड ऑयल्स.
एंड उससे आगे 4th स्टेज में जाते हैं तो एल्कलॉइड्स, टर्पीन्स, कैथेकिन्स, बड़ी हेल्थ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस. So there is a lot of advantage in taking green leafy brassica family, gobi, shobi, and so on and so forth. Because उसमें इतनी health promoting and disease preventing substances हैं, and they are all very low in calorie. So low carb combined with this, and please don't be afraid of animal fats and foods. बेकरी में उसलिए ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप मिल्क ज्यादा लेंगे, नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, तो उसमें लैक्टोज है, तो उसमें भी ग्लूकोज एक साइजेबल क्वांटिटी की आ जाती है. एज आई सेड के 25 ग्राम पर डे ऑफ ग्लूकोज और स्टार्च जो उसका इक्विवेलेंट है, उससे नीचे रखे तो प्रोबेबली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमाइज्ड होता है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, the commonest forms, उससे बचत हो जाती है. Sir, are there any roles of any antioxidants like vitamin E and coenzyme Q और वो जो? Oh, thank you. ये मैं पॉइंट मिस कर गया था. ये जो मैंने कहा ग्रीन लीफी वगैरह, all that, including especially antioxidants. You see the problem is, बहुत से ये जो antioxidants होते हैं ना, ये heat labile होते हैं, and when we cook at higher temperature, तो वो destroy हो जाते हैं. तो खाली pills लेके हम अपना दिल खुश कर रहे होते हैं. But I propose to us all कि please try to take वो जो कच्ची जब salads और vegetables ले, वो तो 100 pills के बराबर होती है. You take a super dosage of antioxidants. That is the best form to take antioxidants. And वो कितने इंसान को, there are zillions of molecules of antioxidants. Plants and fungi know biochemistry far better than we do. इंसान तो in present form शायद 10,000 साल कब से था. Well, fungi have been around for more than 1 billion years. अब उसकी again biochemistry में मैं नहीं जाना चाहता. But plants, foods, uncooked, give you all those antioxidants and whatnot, which even our human science hasn't even discovered today, but are extremely beneficial to human health. थैंक यू सो मच सर. आपने ना हमारा अगले हफ्ते का लेक्चर भी टॉपिक दे दिया कि कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग्स के साथ साथ कार्डियो प्रोटेक्टिव फूड क्या है. इसके ऊपर हम किसी न्यूट्रिशन से रिक्वेस्ट करते हैं. शौकत बुखारी, यू वांट टू गिव द यू आस्क द क्वेश्चन. शौकत बुखारी. अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, thank you so much, sir, for enlightening us about the especially myths about the institution of statins. Sir, my question is from Professor Imran about the statins. Sir, what are the cardiac and non-cardiac indications in which statins must be a part of our treatment? And sir, please, if you have any experience about the PCSK9 inhibitors, what are your experience, if you can share, please? मैं 2 कमेंट्स करना चाहूंगा. पहली तो बात ये कि मेरे से इंडिकेशन पूछे वेयर दे मस्ट बी गिवन, तो मैं बड़े सालों से ये सोच रहा हूँ, क्योंकि आई प्रिस्क्राइब मेडिसिन, आई प्रैक्टिस एज ए कार्डियोलॉजिस्ट. आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ टू अ सिचुएशन फॉर मी टू प्रिस्क्राइब अ स्टैटिन. मेरी अपनी भी एंजियोप्लास्टी भी थी 10 साल पहले, जैसी हुई थी उसके बाद से मैंने स्टैटिन बंद कर दिए थे. सी द पॉइंट इज, जो मैंने आपको डेटा बताया और वो जो बीएमजे का मैंने आपको बताया कि मेटा एनालिसिस ऑफ 18 स्टडीज एंड सिस्टमैटिक रिव्यू, वो तो कह रहा है खुदा के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऊपर जाने दो. अगर आप स्टैटिन लेंगे और ये इसको कम करेंगे तो आप ऑल कॉज मोर्टेलिटी बढ़ा रहे हैं. सो आई एम सॉरी, आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू गिविंग यू वन इंडिकेशन के मैंने कवर नहीं किया. व्हाट यू मे आस्क मी कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, क्या उसमें स्टैटिन देना चाहिए? लेट मी गिव यू अ समरी एंड देयर आर स्टडीज टू द फैक्ट. If they go keto diet, all that, they tend to be healthier and live longer and have no cardiovascular mortality, morbidity, basharte ke they don't take statin. So because they are lucky, they have high LDL cholesterol. High LDL cholesterol is good. और वो जो मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा देख ले, लार्ज पार्टिकल. जस्ट डोंट इन्फ्लेम योरसेल्फ. आपके एंटीऑक्सीडेंट्स डाइट से आगे डायबिटीज को उसको कंट्रोल करें. बाय कंट्रोल ऑफ डायबिटीज इट्स ऑल स्टूपिड. हम क्या करते हैं टाइप 2 में कि हम इंसुलिन पुशिंग ड्रग्स देते हैं, और फिर हम वो नहीं हो रहा तो हम इंसुलिन देते हैं. वी आर एग्रेवेटिंग प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट. Why doesn't humanity decide कि weapon of mass destruction
the worst poison ever invented is white sugar. आप उसको छोड़ें तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? Try to do that and you will enjoy all the benefits of all the pleasures of multiple tastes that are available in umpteen varieties of foods. अगर कोई देखना चाहता है low carb down under पे जाएं, आप इटालियन, इंडियन, फ्रांसी, जापानी, चीनी, जिस किस्म का भी खाना कहें वो 100 नहीं हजारों रेसिपीज दे देंगे जो कि आई थिंक हर टेस्ट के ऊपर, यू नो, इफ माय मिशन वुड बी तो किसी तरह से अगर बंद कराने, आई एम नॉट आफ्टर स्टैटिन एंड कोलेस्ट्रॉल के उसको ठीक करें, कोलेस्ट्रॉल को ऊपर जाए, स्टैटिन बंद करें, आई एम एक्चुअली अगेंस्ट ग्लूकोज। ये शुगर मिलों का क्राइसिस आता, खुदा के लिए शुगर मिलें बंद कराएं, इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और इंसान की बीमारियां भी ठीक। Thank you, sir. Now over to you, Professor Salma Gondi. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure listening to Professor Imran Majeed Saab. And Professor Saab ने तो हमें food for thought दिया है। सबसे पहले मैं इस फोरम पे food for thought ये है कि आप भी प्रिंसिपल हैं, मुलाजिम साहब मैं भी प्रिंसिपल हूँ वुमेन मेडिकल कॉलेज की, हमें अपनी MBBS डिग्रीज के साथ PhD डिग्री भी देने पे सोचना चाहिए। That was such a great idea, क्योंकि अगर हम ये बच्चे बिल्कुल रिसर्चर्स बनाएं तो पाकिस्तान को कितना बड़ा फायदा होगा। बहुत फायदा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। एंड ऑन अ लाइटर नोट मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ जी, हम लोग तो पाकिस्तानी कौम और स्पेशली हम KPK के लोग हर एक चीज के साथ रोटी खाते हैं जी, हम तो डोडीखोर हैं। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, गोश्त हो, चटनी हो, जो कुछ भी हो, वी कांट लिव विदाउट रोटी एंड दैट इज लाइक कार्बोहाइड्रेट। इससे पीछे हम कैसे छुड़ाएं? चीनी तो चलें जी हम छोड़ देंगे, बट व्हाट अबाउट रोटी? रोटी का कोई नहीं बदला। Can I pass a comment here? जी जी बिल्कुल। ये बड़ा important point है। You know, it won't be easy. You know why it is not easy? ये जो ग्लाइडिन कॉम्प्लेक्स है वीट का, एंड वीट इज मोस्ट एडिक्टिंग, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स है विदाउट गोइंग इनटू डिटेल जो कि ओपियोइड प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो मेरे लिहाज से तो इसको रिस्ट्रिक्टेड 4 हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस होनी चाहिए। और ये बड़ी डिटेल आती है कि किस तरह से ये जितना भी स्वीट और वीट, ये जो छोटे साइज का बड़े सिटे वाला जो वीट आ रहा है ओवर टाइम, इसमें ग्लाइडिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एंड द वीट जो आइंड कॉर्न वीट था जो कि पहला डोमेस्टिकेट हुआ था 2000 साल पहले हॉलैंड वगैरह में, उसका सीड आजकल मिलता है, इट हैज अ वेरी लो ग्लाइडिन क्वांटिटी और वो इट इज नॉट एज बैड एज दिस मॉडर्न वीट इज। तो ये एक इशू है, बट हाउ टू डू इट, लेट मी टेल यू अगेन, देयर आर स्टडीज टू द फैक्ट कि जब हम वीट हमारी जो ज्यादा हम लेते हैं वो जो कहते हैं डोडा हो रहा है, तो हम 400 से 600 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे खाते हैं which we don't metabolize or fat. By the way, you do not become fat by eating fat. आप फैट खाना करें कीटो, you lose weight, optimal पे आ जाएगा। It is all by taking starch and glucose. वो जाके आपकी ये जो है ना ट्राइग्लिसराइड बनती है और स्टोरेज फैट उस फॉर्म में जाती है। So because it is addicting, चीनी को बंद तो शायद पता नहीं करा लें, लेकिन on lighter yet serious side, वो मैंने जब ये कोविड वगैरह आया, and I believe कि you know again in COVID, who are the people who are dying of COVID? It is the insulin resistant people. अगर वो अपनी ग्लूकोज स्टार्च वगैरह ना लेते, कोविड तो का वायरस तो खुद से एक सेल को भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। You know when people get COVID, 9-10 दिनों में हर कोई कोविड का वायरस को बॉडी निकाल देती अगर इम्यून डेफिशिएंट नहीं है, और कोविड का वायरस गायब हो जाता है। Then suddenly some people go into the second phase of severe inflammation, become serious, and they some die also. अगर आप उनकी एंटीजन टेस्ट उस टाइम पे करें, they are COVID negative. It is the body's own inflammation. कोविड से पहले इन्फ्लुएंजा वायरस जो लोग प्री इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होते थे बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लुएंजा वायरस उसको बहुत एक्सेजरेट करता था, दे वुड डाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, नॉट बिकॉज इन्फ्लुएंजा वायरस की साइटोलाइसिस। कोविड का वायरस इन्फ्लुएंजा के मुकाबले में 18 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई करता है इन्फ्लेमेशन, एंड व्हेन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड कोविड, उनकी बॉडी में वायरस नहीं, इट्स बॉडीज ओन इन्फ्लेमेशन दैट इज किलिंग। तो ये वो वाली इश्यूज है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखें ना, वो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप।
अगर आज इंसानियत एडिक्टेड है, वो ऑन लाइटर जेट सीरियस साइड में कहता हूँ, वो कहते हैं कि जी वो कुछ लोग एट्रीब्यूट करते हैं ना, वो जन्नत से भी निकाला था तो वो फल जो था गंदम का था। तो मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता जन्नत से गंदम ने निकलवाया था, पर इस दुनिया से यकीनन गंदम ही बंदे को निकलवाए। तो ये थोड़ा सा है। How it will, if you ask me about जितने भी जो लीस्ट एडिक्टिंग है ना स्टार्ची फूड, वो है जौ। एंड जौ अगर आप खाएं तो आपकी सेटाइटी जल्दी हो जाती है, बिकॉज इट इज नॉट एडिक्टिंग एंड यू आर प्रोबेबली नॉट टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। बट आई एम सॉरी, ये इस पे लंबी बात करें तो बहुत आगे चली जाएगी। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। Thank you, Imran Majeed Saab. Thank you. I thank everyone on behalf of PMA and especially Professor Imran Majeed and our panelist, Dr. Tehseen Shah. And special thanks to Dr. Mulazim Bukhari, because he's man behind the gun and he's doing this wonderful job of arranging all these webinars. Thank you, Professor Rashid Saab, for the lovely ayats that you recited. And hope to meet you all next week. And hopefully we'll get a nutritionist who will give us an alternate to this roti that we are having. All the best. Thank Have you a so good much. weekend. Allah बहुत Hafiz. शुक्रिया आप सबका। जी इंशाल्लाह आखिर में मैं सर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर एक मैसेज सर देता हूँ कि पुरसुकून रहें, नॉर्मल ग़िज़ा रखें और इसके बाद अपने जहन आपका पुरसुकून रहेगा तो इंशाल्लाह आप इन बीमारियों से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर। सर जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच एवरीबॉडी। Thank you very much. Thank Allah you. Thank you. Hafiz. Allah Thank you. Hafiz. Thank Thank you, you, everyone. sir. Allah Thank you, Hafiz. sir. Allah Hafiz.